अरे यार इतने बड़े पैकेट में क्या है? I mean, insane. Let's find it out. Let's find it out. This is this is insane. This what is there? No bro packet. That's great. Okay, keep it aside. Here is going to take time. I have big series, so don't worry. It's not gonna take that. Oh man. There you go. Crack it. Wait. Just. Oh man. And. Wow, it's Zebronics. Oh my god, can't see it. Can I? Oh, sorry, man. Oh my god. This is the headphone I am looking for. And इससे पहले मैं यार ये स्टूपिड बिल्कुल मैं चीटेड फील कर रहा हूँ. इसको पता है ये 2000 रुपये का है और 31 अक्टूबर 2001 को खरीदा था मैं. अभी एक साल भी नहीं हुआ, मतलब एक साल में कुछ दिन बचे ही हुए हैं, राइट. और ये इतना इसका ये देख रहे हो इतना फ्रिजर, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा इसको ख़रीदने को. और ये देखो टूट गया था, कितना भी मैंने बहुत सेफ्टी से रखा फिर भी ये इसका ऐसा हालत हो गया. और सबसे बड़ा बात तो यार 3-4 महीने से ऐसा क्या हो रहा है ना कि इसका बैटरी बैकअप इतना 2 कौड़ी का हो गया. कितना भी चार्ज कर लो 10 मिनट से ज़्यादा चलता नहीं है. मतलब अभी चार्ज किए मान लो 10 घंटे लगा दिए चार्ज में, ठीक है अब तो चलेगा कम से कम 2-3 घंटे, ऐसा कुछ भी नहीं है. और ये कहता है कि 20 आवर बैटरी बैकअप. दिस इज़ हॉरिबल, हॉरेंडस, ऑब्नॉक्सियस, मतलब चीटेड. बोट अ बिग नो. बोट मत खरीदा करो. बोट के जो भी जितने हैं ना, इसलिए इंडियन ब्रांड्स बदनाम होते हैं. सही से बना लो ना यार, एक सही से प्रोडक्ट बना लो ना. एंड जेब्रॉनिक्स भी एक इंडियन ब्रांड है, लेकिन मैंने इसको क्यों परचेज़ किया, चलो उसको रीज़न फाइंड आउट करते हैं. यार इसको परचेज़ करने के पीछे रीज़न, बोट तो परचेज़ नहीं करना था और मैं सर्च आउट कर रहा था तो यार बोट ही ज़्यादातर बोट ही मिल रहा था. और क्या मिल रहा था, बोस, BOSE, बोस, राइट. सो उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा. सोनी का भी मिल रहा था. सोनी का भी मैंने हेडफोन यूज़ किया है, WH510 ऐसे करके, राइट. वो भी बिल्कुल भी 3000 रुपये का, वो भी हार्डली एक साल भी नहीं चला. आई मीन 3000 रुपये बक्स फॉर द हेडफोन एंड दैट इज़ समथिंग वो इज़ नॉट इवन ड्यूरेबल फॉर द 1 ईयर. इट्स लाइक हॉरिबल. सो यार ये भी एक इंडियन ब्रांड ही है, लेकिन मैं इंडियन ब्रांड परचेज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आई हैड नो एनी ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट. लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जेब्रॉनिक्स का मेरे पास एक स्पीकर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है. उसको 2 साल पहले मैं परचेज़ किया था और अभी भी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, एकदम बहुत ही रॉकिंग साउंड रहा था उसमें से. तो उस फैक्टर को, मतलब कि एक जो मैंने ख़रीदा था बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है एंड आई एम टोटली इन विद दैट स्पीकर. तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको परचेज़ किया है, राइट. इसको परचेज़ करने का बस एक ही फैक्टर था यार कि 30 आवर प्लेबैक. ये भी देखो 30 आवर बता रहा है. डीप बैस लाइट, LED लाइट ग्लो करेगा, ठीक है. वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट, BT, ब्लूटूथ वर्जन 5.0. So this is Zebronics Zeb-Duke. You can say Zebronics Zeb-Duke, right. अभी यार ये कितने में बढ़ा है? अराउंड 1500, अराउंड. आई एम नॉट सेइंग द एग्जैक्ट फिगर, इससे थोड़ा सा कम है, अराउंड में बता रहा हूँ 1500 पड़ा है, राइट. ब्लू वन है, ब्लू वन ही थोड़ा डिसेंट कलर दिख रहा था. हेडफोन है इसके अंदर, चार्जिंग केबल है, ऑक्स केबल है, यूज़र मैनुअल है, राइट.
एट 50% वॉल्यूम LED, अगर 50% इसका अगर बैटरी होगा तो LED ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो यार इसका और क्या, ऑक्स कॉल फंक्शन, कॉल बात भी कर सकते हो, डुअल पेयरिंग, एक साथ दो बंदे पेयर कर सकते हैं, सॉफ्ट ईयर cushions, lightweight, 40 mm drivers, right? So let's find it out. This is really worth to purchase. I mean, I have purchased. If I will not find this is cool enough, then what I can do, I can return it, right? But this is not the intention to return it. All the intention is to use it, and I hope this is gonna work absolutely fine, right? So चलो यार इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसा साउंड वाउंड कैसा आ रहा है, क्या मतलब धमाल है या बिल्कुल बकवास है, राइट। एंड आई होप कि बकवास ना हो, डिसअपॉइंट ना करे मुझे, क्योंकि यार जो इसका मैंने स्पीकर बताया था काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा अभी तक, सो फार सो गुड, सो लेट्स सी। यार ये ब्लू नहीं दिया इसने, ऐसे यहाँ मैंने ब्लू टिक किया था और यहाँ पे भी ब्लू टिक किया हुआ है, और देख सकते हो, है ना, एक मिनट, ब्लू टिक किया हुआ है यहाँ पे भी ब्लू टिक किया हुआ है, लेकिन इट्स नॉट ब्लू, इट्स नॉट नीदर ब्लैक, दिस इज ग्रीन कलर, राइट, दिस इज ग्रीन कलर। सो ये ब्लू तो कहीं से भी नहीं है। और क्या है, दिस इज फॉर चार्जिंग, राइट, एंड दिस इज ऑक्स केबल, वो एल्स वो मैनुअल इज है, राइट। सो कलर थोड़ा ब्लू रहता तो ज़्यादा बेहतर था। एनीवे, let me connect it with my mobile and find it out really is for cool or not. Let's find it out. Right here, there we go. Right guys, this is gonna take time, so where is the power button? Power, give me some power. Yeah. This is plus, minus, middle one is a power button, you can see. It is light is glowing, right। इसको थोड़ा extend भी कर सकते हैं इसको, right। This is not an issue at all। Oh man, why is power not this much? Where is right and left? How to find it out? This is the left one. First I need to connect it with my mobile. Ooh, Zebronics. What is that? What is right here? Zebronics Zeb-Duke County. Is it county here? No speaker. No, I'm not looking for a speaker. Oh, how to find it here? Let me talk. Well guys, connect हो गया है। चलो यार कुछ गाना प्ले करके देखते हैं यार। Man, any song? What the hell is that? Dark spots for Rusty Center. नया L'Oreal Paris लाइका। Gravity is working against me.
Sound is not bad, not bad. Sound is not bad. Yeah, it's well, I would say this इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, नो डाउट, बट इट हैज़ सम बेनिफिट एज वेल. लाइक इसका जो साउंड लिटिल लाइक इज प्लीजेंट. इसमें थोड़ा सा लाइक ज़्यादा बूम बूम काइंड ऑफ दिस. इफ इसमें नो डाउट बेकार है बहुत, लेकिन इसकी जो साउंड थोड़ी सी प्लीजेंट होती थी. और इसका थोड़ा सा मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है. सो अभी मैं एक दो दिन और थोड़ा सा देखता हूँ. अगर इफ़ आई एम रियल फाइन कूल इनफ राइट, देन I can purchase, I can return it, otherwise I'm gonna be returning it. But returning is not my intention. If I'm really fine cool enough, let me use more, at least for the 1 hour, so that I can make any judgment of it. But meanwhile, if you want to purchase, sound is good. It's not bad. I'm not saying it's bad. Let me try once again. This is right. Yeah. Yeah. It's good, but as compared to this, little disappointed. Here the voice was little, sound was pleasant. If you listen, it's like it's not harsh. It should be the way, like the sound was the way it should be, right? So little disappointed, right? Anyway, if you want to purchase, link is given in the description where you can purchase this and have fun. Right, this is me signing off from this video. Have a great